अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शंस। दिस इज़ मी नौशीन चौधरी और मेरे साथ अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज़ मी चौधरी आसिफ अली। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज हमारे साथ अम्मी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा, की हाल है? ठीक हो? और सुनाए रमज़ान कैसा जा रहा है? बांग्लादेश में थोड़ी गर्मी है, वहाँ ज़रा ज़्यादा गर्मी होती है। पाकिस्तान में तो अभी मौसम नॉर्मल है, जिस सिटी में हम रहते हैं यहाँ। हाँ, यहाँ पे तो इस्लामाबाद का मौसम अभी जो है वो कभी कभी हम फ़ैन ऑफ भी कर देते हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है। तो वी होप सो कि आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मज़े में होंगे। तो आज हम जो वीडियो लेके आए हैं वो भी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। वीडियो का टाइटल है द शिप ब्रेकिंग यार्ड्स ऑफ चिटागोंग बांग्लादेश। तो चिटागोंग की सैर करेंगे आज हम। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। Let's start the video. 3, 2, 1, start. Alrighty, hello guys, this is Doug. I am here in Chittagong, Bangladesh. I'm here with my friend Faisal. Hi. And he is so nice, he's agreed to help me out to visit the shipbreaking yards of Chittagong, which are very famous, where ships go to die. What'd you say? His name is Kumira. Kumira. Where we are now? Now we are in Akekan Mall. Akakan Moor, and we're going to Kumira. So we are going to head there shortly. We're just waiting to catch a minibus to the shipyards. I've heard that they are not very fond of foreigners walking around with cameras there, which I'll talk about more later in this video, but I'm gonna get as close as I can. I hope it turns out well. Let's see how it goes. Here we go. Alright guys, so we're on the bus now and we are headed to the shipyards. लोकल बस में भी बैठने का अपना ही मज़ा। ये ऐसे पहले होती थी जब हम गाँव जाते थे ना, विंडोज़ इतनी बड़ी बड़ी, डर लगता था बीच में से गिरना चाहिए। यहाँ पे भी आगे भी बैठे हैं, लेकिन अब ऐसी बस कम ही देखी है। ये Okay, we got off the bus. ऑटो रिक्शा। So I just found out from Faisal here that the people here speak a different language, not Bangla, not Bengali. They speak Chittagongian language. the Chittagongian language. So in Bangla, how are you is kemonachin, and in Chittagongian it's Kanaso. 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 खाना सो মানসিবেরে আর করত আছে আমি মানসিবের সাহায্য করতে বুঝছেন না আর না আই বুঝি थोड़ा बैकवर्ड एरिया में। Are those fishing nets? yes Wow. fishing this is fishing fisherman's Fisher village? Fisherman village? Oh my सारे gosh. जो है ना यहाँ पे वो Wow. लग रहे हैं। Oh my gosh. fishermen। I will try my best for Thank you, man. Thank you. We're gonna try our best to get in there. We'll see. Oh, big fire! Wow, this is pretty intense place. okay you sit down Okay. ZHT Limited। All right, guys. So we got turned away from that one, but we are going to check out another shipyard. There are many in this area, so we're continuing on. No smoke। All right, guys. So we got turned away by a couple more shipyards. So we're going to a bridge now that sticks out into the water, and hopefully I'll be able to get some drone shots and get in kind of close there. But we'll have to see with the wind and whatnot. But I'm going to do my best, and we'll keep trying to see if we can get access to any of them. Wow. যাও যাও এখানে বানানো বানানো So guys, we were just over there somewhere trying to get into one of these yards where you see these big ships. We were not able to yet. We'll see what happens. Now we're here on this bridge, and Wow, look over on this beautiful. side. There are boats on the other direction as far as you can see. Just fade off.
unbelievable. There's so many ships here. We're at the end of the dock now, the end of the bridge. बहुत ही big. And we're gonna see if we can get a boat, hire a boat to get us even closer to those ships to take a closer look. All right, here we go. These are the shipbreaking yards of Chittagong, Bangladesh. Shipbreaking is big business here. The industry began in the 1960s and grew to handle up to 50% of worldwide shipbreaking as recently as 2012. The industry employs over 200,000 Bangladeshis and provides over half of all the steel in the country. Chittagong is famous in the shipping industry, known as the place where ships go to die, and the yards were even featured in one of Marvel's Avengers movies. But there's a darker side to this industry. Chittagong was able to grow so quickly as a shipbreaking hub largely because of its extremely cheap labor and low environmental standards. These two factors and others made Chittagong a highly affordable place for ship owners to ditch their ships once they were taken out of service, but they also made shipbreaking in Bangladesh one of the most dangerous jobs in the world. In 2014, National Geographic published a story on Chittagong's shipbreaking industry and brought the reality of life in the yards to an international audience. They exposed thousands of workers with little to no formal training and almost no protective equipment. Most workers wore flimsy plastic flip-flops, working for 12 to 16 hours a day. Rampant asbestos, ships filled with toxic chemicals, massive explosions, and falling chunks of metal all made working in the yards especially deadly. Amidst the fallout from the Nat Geo story, some shipping companies pledged to stop using the Chittagong yards altogether. And, unsurprisingly, it also became a lot harder for outsiders to gain access to the yards. Today, conditions in the Chittagong yards remain far from perfect. According to The Guardian, as of 2017, only one yard in Bangladesh met international standards. Still, it appears that some improvements have been made. The few workers I got a look at for my drone appeared to be wearing hard hats and protective gear, and the few yards I tried to visit made sure to call out their compliance on signs outside their facilities. But there are over 80 privately owned shipbreaking yards in Chittagong, and conditions in the yards can vary. Parts of ships. All of this. So all of this is part of the ships? Yes. So right now we're driving past the area where all of the stuff that they salvage from the ships ends up. And it's all sorted and, you know, either turned into scrap, sold for scrap, or recycled, or sold on in any way that it can be. But this just goes on for as long as you can see. It's unbelievable. Look at all this. And all this is from the ships? From the ship's kitchens, the sinks, the rails, the metal cabinets. It's everything. Even life jackets. Unbelievable. Look at this. Look at all the ladders and pots and pans and buoys. Trash cans. Man, you've got all of the stuff that's actually on the ship, that's left on the ship when the owners sell it to the yard. This whole area smells kind of like welding, like burning metal. You can totally smell it in the air even as we drive along. There's a lot of metal being processed here, and plastic and wood and a lot of other stuff. Basically everything. Here are like, what is that, shower toilets from the boats. Wow, more boats. Chairs, tables, cabinets, sofas. It's hard to comprehend the scale of this. It's unreal. Alrighty guys, we are here now at a nice spot in Chittagong, or Chattogram. 2 names for this city, by the way. Just watching the sunset. It's absolutely beautiful. That's going to be the end of this video. I hope you enjoyed learning a bit about the shipbreaking yards here in Chittagong. I'm sorry I couldn't get closer and talk to the guys that were working there, but I hope it was still enjoyable.
I've got a lot more from Bangladesh coming very, very soon, so stay tuned. Other than that, thank you so much for watching, and I will see you in the next one. Bye-bye. तो फ्रेंड्स ये था आज का वीडियो, बहुत ही डिफरेंट, और मुझे तो इससे वीडियो देखने से पहले पता ही नहीं था कि ये भी इस तरह की भी जॉब्स हैं बांग्लादेश में कि शिप जो है वो उसको ब्रेकिंग यार्ड्स वाली वीडियो। तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि शिप ब्रेकिंग जो है वो भी होती है कि पूरी दुनिया की शिप्स आते हैं और इतने बड़े और इतने ह्यूज शिप्स को तोड़ना ये तो इमेजिन भी नहीं कर सकते। बहुत ही डेंजरस और बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है ये चिटागोंग वाले करते हैं, उनके लिए हैट्स ऑफ टू यू। और जैसा कि वो व्लॉगर जो हैं वो पास भी नहीं जा सके, उन्होंने मना किया होगा, कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस भी होती हैं, तो बहुत डेंजरस काम लग रहा था और ये बहुत ही मेहनत वाला काम है। तो फ्रेंड मुझे भी बहुत मज़े की वीडियो लगी है कि बांग्लादेश में जो चिटागोंग है पूरी दुनिया से यहाँ पे वो बता रहे थे शिप्स आती हैं, तो लेबर भी चीप है और काम भी ज़ाहिर बात है अच्छा करते होंगे और बड़ा ख़तरनाक काम है। उन्होंने बताया कुछ स्टैंडर्ड्स को अब बेहतर किया जा रहा है, इससे पहले नहीं था बेहतर। तो बांग्लादेश की गवर्नमेंट और चीज़ों में भी काम कर रही है, तो उम्मीद करते हैं इसमें भी थोड़ा काम करेगी ताकि सेफ्टी स्टैंडर्ड हो और जो लोग वो काम कर रहे हैं उनको अच्छी सैलरीज भी मिलें और सेफ्टी के उनका ख्याल रखा जाए। बाकी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें वहाँ पड़ी हुई थी, बड़ी बड़ी बॉल्स पड़ी हुई थी और ये शिप बहुत बड़ी होती हैं, तो इनको डिसअसेंबल करना तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो वाकई बांग्लादेश के लोग बहुत मेहनती हैं, इसीलिए बांग्लादेश इतना ग्रो कर रहा है। वी रियली लाइक दिस वीडियो। अंदर बैठे मैंने बड़ा अच्छा लगा वे समंदर विच वड्डियां वड्डियां किश्तियां वड्डे वड्डे जहाज अच्छा लोग जान रहे ने। मैं पहली दफ़ा वेख्या एडा वड्डा समंदर काम कर रहे ने, अपनियां मेहनतां करन रहे ने, बहुत अच्छा लगा है, बहुत मज़ा आया वेंदिया। किचन दियां चीज़ां सन अलमारियां सेफ अलमारियां चीज़ां किचन दियां। मेरा भी जी करदा है मैं जाके बाजार विच जावां, मैं भी चीज़ां वेख के आवां, कोई नवी चीज़ मैनूं पसंद है मैं भी लैके आवां। हमें कमेंट्स में बताइएगा कि ये चीज़ें जो सस्ते रेट पे मिलती होंगी, ज़ाहिर बात है, तो आप लोग तो जाते होंगे मार्केट में, तो किस तरह किस रेट पे मिलती हैं और कैसी चीज़ें होती हैं, क्योंकि पूरी दुनिया से चीज़ें आती हैं तो इम्पोर्टेड चीज़ें भी होती होंगी। चिटागोंग में है ये, तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पूरी दुनिया से यहाँ पे शिप जो है वो ब्रेक होने के लिए आते हैं। तो चिटागोंग में तो बहुत सारे लोगों को जो है फिर वो यही काफ़ी लोगों की जॉब होगी या आउट ऑफ सिटी से भी आते हैं लोग, ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, क्योंकि उन्होंने बताया कि 80 प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिसमें लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो चिटागोंग के मैक्सिमम लोग काम करते होंगे फिर। तो ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले वीडियो देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे ऑसम, अल्लाह हाफिज़।